Hello students, welcome back to the class of psychology. So this is chapter 2, self and personality, part 6, post-Freudian approaches, or we can say it Neo-Analytic approach also. Okay students, so in previous module we studied about the psychodynamic approach which is given by the Sigmund Freud, and now we study the post-Freudian approach. Actually students, the Freud's idea were further developed by other theorists, some of whom had even worked with him, or some of his disciples, some of his followers. They developed the other theories. Okay, sometime it happens that they वो लोगों ने उन लोगों ने जो फ्रॉइड के आइडियाज़ थे उनको रिजेक्ट कर दिया, या उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, दे आर नॉट एग्रीड विद दैम विद हिम. सो दैट्स वाई दे डेवलप सम न्यू थ्योरीज. ओके, सो द पोस्ट दैट्स वाई वी कॉल दिस अप्रोच एज अ पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेज टू फॉर द personality. Okay, so these theorists were called as the post Freudian or neo Freudians. Okay, Neo-Freudian or Neo-Analytic theorist. Those psychoanalysts who disagreed with certain aspects of Freud's thinking and developed their own theories. Okay, students. So important post-Freudians जो theorists थे, they were Carl Jung, Karen Horney, Alfred Adler, Erich Fromm, Erik Erikson, and the Anna Freud, the Freud's daughter. So these theorists believe that Freud did not give social and cultural factors a sufficiently important role in the development of personality, in his stages of personality, in structure of personality, id, ego, superego. So there is a lacking related to the social and cultural factors. So these neo-analysts are characterized by less emphasis upon sexual and aggressive tendencies, as well as by the expansion of the concept of ego. Okay students, so they basically expand the thing ego, which is given by the Freud basically, but they put some points, some factors related to social and cultural factors also, and they रिजेक्ट द नोशन, और दे बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वो उन्होंने लेस एम्फेसिस किया था अपॉन द सेक्सुअल एंड अग्रेसिव टेंडेंसीज. So less prominent role to sexual and aggressive tendencies of the id we can see in the post-Freudian approaches. Okay, we can see the expansion of the concept ego in this neo-analytic approach, and the emphasis human qualities of creativity, competence, and problem solving we can see in the further theorist, according to further theorist. Okay, so the first theorist or first neo-analyst is Carl Jung. Okay, who emphasis on aims and aspirations are the source of energy. According to Carl Jung, aims and aspirations are the source of energy. So basically students, Carl Jung worked with Freud, but later on broke away from Freud. So after that, when he broke away from the Freud, he developed his own theory of personality called as analytical psychology. So basically students, Carl Jung saw human being as guided by aims and aspirations. उनके अकॉर्डिंग जितना भी हम लोग जो भी वर्क करते हैं, जो भी हमारी ड्रिवन फोर्स है, हमारा मोटिवेशन है फॉर द लाइफ, दिस इज बेस्ड इन द एम्स एंड एस्पिरेशंस. ओके, सो he developed his own theory of personality named as a analytical psychology. So he did not believe that the personality is almost, या फिर हम लोग कह सकते हैं almost completely formed in the early childhood. For Jung, the middle age was an even more important period from the point view of the personality development. So that's why he developed the analytical psychology. So students, analytical psychology means that personality consists of competing forces and structures within the individual that must be balanced. जो भी structure है और जो हमारी forces हैं जो कि हमें force करती हैं, कुछ instinct, जैसे कि फ्रॉइड की थ्योरी में instincts थे, ठीक है, कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स थे, लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स. तो अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग हमारे पास कुछ कॉम्पिटिंग फोर्सेस होती हैं जो कि हमें किसी भी काम को करने के लिए फोर्स करती हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी होती है, एंड द स्ट्रक्चर विद इन द इंडिविजुअल एंड द कम्पीटिंग फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड रादर दैन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिमांड ऑफ सोसाइटी और बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द reality. So students, Jung also disagreed with Freud regarding the basic structure of personality. So Jung held that personality consists of three parts: ego, personal unconscious, and the collective unconscious. So when Carl Jung expanded the ego, so according to Carl Jung, the ego consists
the normal daily activities of the consciousness, and the personal unconscious develops as a consequence of one's own experiences. So we can say कि हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत यूनिक होते हैं हर पर्सन के अपने अपने, ठीक है, पर्सनल अनकॉन्शियस. एंड व्हेन वी टॉक फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि हमारी कुछ रिप्रेस्ड मेमोरीज होती हैं, कुछ इम्पल्सेस होते हैं, कुछ थॉट्स हमारे, कुछ विशेज़ हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो कहाँ पर आएंगे, पर्सनल अनकॉन्शियस में. तो ईगो द मोस्ट अवेयर पार्ट ऑफ आर डेली एक्टिविटीज़, पर्सनल अनकॉन्शियस रिलेटेड टू द रिप्रेस्ड मेमोरीज, द थॉट्स, विशेज़, डिज़ायर्स, ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द collective unconscious, it is the deepest and most, the collective unconscious, it is the deepest and most inaccessible layer of unconscious. So it consists of memories and universal experiences of mankind transmitted to each individual from one generation to the other. ठीक है. तो collective unconscious consisting of archetypes, you can see on the screen also students, the archetypes or primordial images not individually acquired but are inherited, found in myths, dreams and arts of all mankind. ठीक है. तो उन्होंने archetype पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था कार्ल जुंग ने. एंड we can define archetypes as inherited tendency to respond to universal human situations in particular ways. So according to Jung, the tendency of the people to believe in God, evil spirits, mother, earth, devil, etc. all result from inherited archetypes. ठीक है स्टूडेंट्स. सो अकॉर्डिंग टू Jung, students, the self is very important. So Jung was of view that self archetypes strive for unity and the openness. Okay, so the existence of self archetypes causes a gradual movement toward wholeness, balance and harmony within the personality. So the self represents the full development of personality and is attained only when the opposing forces within the integrated and balanced. So according to Carl Jung, the person must become increasingly aware of the wisdom available in one's personal and collective unconscious and must learn to live harmony with it. और तभी हम लोग कह सकते हैं कि एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बन सकती है अगर सब कुछ हारमनी में है, हमारा सेल्फ जो है वो नॉर्मल है. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट Neo-Freudian was Karen Horney. Karen Horney emphasis on the optimism. So optimistic view of human life with emphasis on human growth and self-actualization is given by the Karen Horney. Okay, she challenged to Freud's treatment of women as inferior. Okay, according to Karen Horney, each sex has attributes to be admired by the other. Okay, जैसे कि फ्रॉइड की जो कंप्लीट थियोरी थी, इट इज़ बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा का पूरा एम्फेसिस ऑन अनकॉन्शियस मोटिवेशन एंड द बेसिक टूल्स ऑफ साइकोएनालिसिस, एंड ही एम्फेसिस ऑन द male part of the society. But the Karen Horney, adopted a more optimistic view of human life with the emphasis on human growth. Okay students, so according to Karen Horney, neither sex can be viewed as superior or inferior, countered that women were more likely to be affected by social and cultural factors than by biological factors. Okay, so Horney did not accept the division of personality into id, ego and superego. Okay, अब उन्होंने पूरा completely उससे वो कर दिया था, reject कर दिया था. And Horney further insisted that in order to be mentally healthy, a person needs safety and satisfaction. Okay, so psychological disorders were caused by disturbed interpersonal relationship during childhood. Actually students, Karen Horney ने कुछ लाइट डाली है psychological disorders पर भी, और उनके अकॉर्डिंग चाइल्डहुड में ही, ठीक है, कि कुछ ऐसी फ्रस्ट्रेशन डेवलप्ड इन अर्ली चाइल्डहुड बाय पेरेंट्स हु आर अनअफेक्शनेट, रिजेक्टिंग एंड होस्टाइल टुवर्ड्स देयर चाइल्ड. सो सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के डेवलप्ड. ओके, एंड अगर वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब रही ड्यूरिंग द चाइल्डहुड तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है, जिसको कि उन्होंने क्या बोला है, बेसिक एंजाइटी इन द चिल्ड्रन. व्हेन पेरेंट्स बिहेवियर टुवर्ड अ चाइल्ड इज इनडिफरेंट, discouraging and erecting, the child feels insecure and a feeling called basic anxiety results. Deep resentment toward parents or basic hostility occur due to this anxiety. और इसी एंजाइटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जिनको कि मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं, जिनमें से एक कोपिंग स्ट्रैटेजी होती है मूविंग टुवर्ड पीपल, जो लोग बाय डिपेंडिंग ऑन देम फॉर लव, सपोर्ट और फ्रेंडशिप. और सम पर्सनालिटी वी कैन ऑब्जर्व दे आर टाइप ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम पीपल बाय विड्रॉइंग और बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट. ओके, तो कुछ इस तरह की कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं. सो अ नॉर्मल पर्सन मूव्स इन ऑल थ्री वेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन, बट अ साइकोलॉजिकल और
मेंटली इल पर्सन जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्नी, विल यूज ओनली वन वे to reduce anxiety and will use it excessively and inappropriately. That's why psychological treatments बनाए गए हैं, psychoanalysis use किया जाता है to treat some kind of psychological disorders. Okay students, now the next one is the Alfred Adler. Basically he focused on lifestyle and social interest and source of energy attainments of personal goals. सो बेसिकली अल्फ्रेड एडलर ने जो थे proposed a different theory popularly called as individual psychology. So Adler broke away from Freud because he disagreed with Freud's emphasis on unconscious sexuality as well as on instinctual devices. So basically students, Adler believed that everyone experiences feeling of inferiority. उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सब लोग अपने अंदर एक इन्फीरियरिटी फील करते हैं, एंड दिस अकर्स मेनली बिकॉज वी बिगिन आवर लाइफ एज अ स्मॉल, weak and relatively powerless like a child and surrounded by powerful adults. So this feeling of inferiority may also come from our personal limitations because we as a child we feel helpless. So basically एक inferiority वाली feeling आ जाती है. So basically that's why Adler maintained that we are driven by the need to compensate for inferiority and we want to strive for the superiority. So अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड. अब उसका गोल क्या होता है? गोल यही होता है कि वी पूरे लाइफ टाइम हम लोग सुपीरियरिटी की सर्च में रहते हैं और उस इन्फीरियरिटी को कंपनसेट करते रहते हैं. सो ईच वन ऑफ अस हैज़ द कैपेसिटी टू चूज एंड create in ourselves. So personal goals that provide us with security and help us in overcoming the feeling of inadequacy are the sources of our motivation. और यही चीज़ हमें मोटिवेट करती रहती है. Every individual suffers from the feeling of inadequacy, inferiority complex which arises from childhood and we strive for the superiority for the lifetime. So according to Adler, the case of each person's style of life is formed by the age of 5. ठीक है, और we all have a capacity to create and choose and we have our own unique style. ओके और यही जो ओन हमारी लाइफस्टाइल होती है, इसी की वजह से हम मोटिवेट होते रहते हैं, हम गाइड होते रहते हैं, हमारे कुछ पर्सनल गोल्स डिसाइड करते हैं कि हमें ये बनना है, ये करना है, इस तरह से. और फिर हम हमारे सिक्योरिटी और फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी को ख़त्म करने के लिए हम कुछ मोटिवेशन के सोर्सेज भी सर्च कर लेते हैं. लाइक हम लोग कोई पेरेंट है, कोई टीचर है, कोई सिबलिंग, कोई आइडियल बना लेते हैं हमारी लाइफ में, जिससे कि हम ये फील कर सकें कि येस वी आर सुपीरियर, आई एम अ सुपीरियर पर्सन. वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम खत्म करना चाहते हैं. And another important factor in personality development emphasized by Adler was social interest. So he was of view that human beings are born with positive motive called social interest for establishing loving and helpful relationship with others. So students, the full development of healthy personality requires that the person must learn to express this motive fully in his or her relationship with others. So basically according to Adler, when we need helpful relationship, when we maintain helpful relationship with others, this is the social interest. ठीक है, तो according to Alfred Adler, a very famous comment of Adler is that the social interest is the barometer of psychological health. ठीक है, अब psychological health उसी person की बहुत अच्छी होगी जिसका कि social interest, social जो gathering है, उसकी जो social life है वो बहुत ही अच्छी है. ठीक है, so the next person is the Eric Fromm. He emphasis on human concerns. So social orientation viewed human being as social beings who could be understood in terms of their relationship with others. So according to Eric Fromm, वो किस में बिलीव करते थे कि अगर हमें किसी भी ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को समझना है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नीड टू अंडरस्टैंड द सोशल ओरिएंटेशन. ठीक है, सोशल ओरिएंटेशन क्या हो सकती है? सोशल ओरिएंटेशन हम कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं? वी कैन व्यूड सोशल ओरिएंटेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स एज सोशल बीइंग्स. ठीक है, अब उन लोगों की, ह्यूमन बीइंग्स की किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसी है? इफ़ वी अंडरस्टूड दिस थिंग वी कैन अंडरस्टूड द पर्सन, द पर्सनालिटी ऑल्सो. सो कैरेक्टर ट्रेट्स, द पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस विद दियर इंडिविजुअल्स. धीरे धीरे इसी रिलेशनशिप को मेंटेन करते करते दूसरों से हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उसी के थ्रू हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं और यही हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करती हैं. सो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज सच एज ग्रोथ फ्रॉम आर एक्सपीरियंसेस और पोटेंशियल्स रिजल्टेड फ्रॉम अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर justice and truth. So basically students, we all want when we communicate with our parents, we communicate with others as a child, so we follow some gestures, some tones of voice and their feelings about
लाइफ। सो बेसिकली स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव डन कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एक सपोर्ट मिल रहा है, एक सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक वार्मनेस मिल रही है, और इसी से हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं। सो अकॉर्डिंग टू एरिक फ्रॉम, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ लाइक ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिजल्टेड फ्रॉम अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम। और हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग जस्टिस एंड ग्रोथ के लिए स्ट्राइव करते हैं। So people's dominant character traits in a given work as forces in shaping the social processes and the culture itself। ठीक है, अब यही चीज़ें होती हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को बनाती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि सपोज़ हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि सपोज ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन है जो कि अपने सन को कुछ चीज़ें सिखाता है। तो जो चाइल्ड होता है वो बेसिकली क्या करता है, अपने फादर को हर चीज़ में फॉलो करता है, चाहे उनकी ईटिंग स्टाइल हो, उनकी लिविंग स्टाइल हो, उनकी बोलने की स्टाइल हो। और इसी तरह से अगर हम बहुत ही लविंग, चीयरिंग और हमारे पास बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं तो क्या होगा, हम एक फ्रेंडली, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर वहीं बहुत जजमेंटल पेरेंट्स हैं तो हम एक नॉन हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, एंड दिस अफेक्ट आर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज अ चाइल्ड, और ये पूरे टाइम चलती है। तो बेसिकली एरिक फ्रॉम ने ह्यूमन कंसर्न्स को एम्फेसिस किया है टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। नाउ द लास्ट वन इज एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन सर्च फॉर आइडेंटिटी। सो स्टूडेंट्स, एरिक एरिक्सन उन्होंने बताया है रेशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने जो थ्योरी है उसके अंदर ही एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, एंड ही emphasize on social development as psychosocial development. So according to Erikson, we move through 8 stages, और इन 8 different stages में हम लोग different साइको सोशल डेवलपमेंट जो होता है उसको पास अवे करते हुए चले जाते हैं। सो रेशनल थॉट्स होते हैं, कुछ कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस होती हैं ड्यूरिंग आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, डेवलपमेंट इज व्यूड एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड ईगो आइडेंटिटी इज ग्रांटेड अ सेंट्रल प्लेस इन दिस प्रोसेस। तो 8 स्टेजेस में बेसिकली ईगो आइडेंटिटी ही, ठीक है, हम लोग हमारे ईगो आइडेंटिटी को ही सर्च कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी क्राइसिस एट द एडोलसेंस एज, young people must generate for themselves a central perspective and a direction that can give them a meaningful sense of unity and purpose। तो जब उन्होंने एरिक एरिक्सन ने जब ईगो को एक्सपेंशन किया तो उन्होंने उसे बताया कि हम लोग ईगो आइडेंटिटी, जिसको कि उन्होंने बोला है सेल्फ आइडेंटिटी, के लिए हम लोग सर्च करते रहते हैं, लाइक रोल कन्फ्यूज़न हम इसके कह सकते हैं। सो दैट्स वाई एरिक एरिक्सन को ईगो साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, और उनके अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर कॉल्ड द ईगो साइकोलॉजी कंस्टिट्यूट अ रेडिकल चेंज फ्रॉम द अर्लियर साइकोएनालिटिक थॉट्स। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग द पर्सन्स एज मच मोर रेशनल एंड लॉजिकल होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर और प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर। सो दैट्स वाई जो आइडेंटिटी क्राइसिस होती है ना, एडोलसेंस में आ जाती है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम बड़े हैं या छोटे हैं, इस तरह की हम लोग अगर वो एडोलसेंस पूरी 8 स्टेज, मतलब जो भी इंडिविजुअल है वो पूरी 8 स्टेजेस में अपनी आइडेंटिटी सर्च कर लेता है। नेक्स्ट, एडोलसेंस एज में भी वो आइडेंटिटी क्राइसिस अपनी सेल्फ को प्रॉपर्ली अंडरस्टूड कर लेता है, तो वो एक हेल्दी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकता है, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट अफेक्ट नहीं होती है। बट सपोज अगर वो ये सब कुछ नहीं कर पाता है तो उसकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं हो पाती है। ठीक है, एक पर्सनैलिटी जो होती है, रोल कन्फ्यूजन उसकी लाइफ में बना रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज क्रिटिसिज्म टू साइकोडायनेमिक थ्योरी। तो सो स्टूडेंट, द फर्स्ट वन इज कुछ सम जो थ्योरिस्ट उन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया है साइकोडायनेमिक थ्योरी को। तो द थ्योरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज, दे लैक ऑफ अ रिगरस साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, वहाँ पे केस स्टडीज़ के ऊपर है, कोई एक्सपेरिमेंट, कोई रिसर्चेज नहीं है। बेसिकली दे यूज स्मॉल एंड अ टिपिकल इंडिविजुअल सैम्पल्स फॉर एडवांसिंग जनरलाइजेशन। The third one is the concepts are not properly defined and it is difficult to submit them to scientific testing, like Oedipus complex, Electra complex, Felix stage, anal stage are lacking of, they are not properly defined in a proper manner. Okay, so it is very difficult to put them in scientific testing. And the last one is Freud has used males as a prototype of all human personality development and overlooked female experiences and perspective. That's why इसीलिए कैरन हॉर्नी ने भी उन्हें बताया कि वो फीमेल पर्सपेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो कैरन हॉर्नी ने फीमेल पर्सपेक्टिव को ज़्यादा फोकस किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।